Ladies and gentlemen, we now await the arrival of the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. The Honorable Rashtrapati will be received with 21 gun salutes. The practice of firing of 21 gun salutes dates back several hundred years and indicates a rich martial tradition. It is the highest honor accorded to the most honorable member of the Union of India, the President of India. All spectators are requested to rise on the arrival of the Honorable President. Please note that Rashtra salute will be accorded to the President with the national anthem played by the band. देवियों और सज्जनों, अब से कुछ ही क्षणों में भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया इस समारोह में पधारेंगी। राष्ट्रपति महोदया के स्वागत में उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 21 तोपों की सलामी एक बहुमूल्य प्राचीन सैन्य परंपरा है। यह सर्वोच्च सम्मान भारतीय गणराज्य के सबसे माननीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है। सभी आगंतुकों से सविनय निवेदन है कि वे माननीय राष्ट्रपति के आगमन पर और उन्हें राष्ट्रीय सलामी दिए जाने पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
നാവികസേനയുടെ ആയുധ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ഐ.എൻ.എസ് ദ്രോണാചാര്യയ്ക്ക് പ്രസിഡന്റ്സ് കളർ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപദി മുർമു സമ്മാനിക്കും. സായുധസേന യൂണിറ്റിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അംഗീകാരമാണ് പ്രസിഡന്റ്സ് കളർ. ആയുധ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ഐ.എൻ.എസ് ദ്രോണാചാര്യയ്ക്ക് പ്രസിഡന്റ്സ് കളർ സമ്മാനിക്കുന്ന ചടങ്ങ് അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും. രാഷ്ട്രപതി പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഐ.എൻ.എസ് ദ്രോണാചാര്യയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. Ladies and gentlemen, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, has arrived at the venue. देवियों और सज्जनों, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गई हैं. उनके अनुरक्षण हेतु उनके परिसहायक सब लेफ्टिनेंट रॉयल कोहर्ड और सब लेफ्टिनेंट अभिषेक मान हैं. The Honorable President of India is being escorted by Sub-Lieutenant Royal Kohard and Sub-Lieutenant Abhishek Man.
सभी अतिथियों से आग्रह है कि कृपया अपने आसन ग्रहण करें। Ladies and gentlemen, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, accompanied by Admiral R. Hari Kumar, Chief of the Naval Staff, and the Parade Commander, Commander Bipin Krishna, will now review the Guard of Honor. देवियों और सज्जनों, भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और परेड कमांडर कमांडर बिपिन कृष्णा के साथ आप गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगी। In honor of the President of India, standing proudly before you today on parade are 400 personnel of ഐ.എന. Dronacharya. At the helm of the 150 men honor guard is Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia as Officer of the Guard 1 and Lieutenant Commander Sumit Deorari to his left as Officer of the Guard 2. On the right side of the guard, we have 36 members of the ഐ.എന. Dronacharya band, and the music is being conducted by T. Vijay Raj, Master Chief Petty Officer, musician, first class. राष्ट्रपति जी के सम्मान में भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य के 400 वीर नौसैनिक आज परेड में आपके समक्ष गर्व से खड़े हैं। 150 जवानों के सम्मान गार्ड के शीर्ष पर लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल अहलूवालिया गार्ड 1 के अधिकारी के रूप में और लेफ्टिनेंट कमांडर सुमित देवराड़ी गार्ड 2 के अधिकारी के रूप में उनकी बाईं ओर हैं। In a few minutes from now, we will witness the commencement of President's Color Ceremony with the insertion of drum toli for the Pile of Drums ceremony. देवियों एवं सज्जनों, अब से कुछ ही क्षणों में हम पाइल ऑफ ड्रम समारोह के लिए ड्रम टोली की प्रविष्टि के साथ राष्ट्रपति निशान समारोह का प्रारंभ होते देखेंगे।
drums ceremony is also known as the drumhead service. It traces its origin back to a time when soldiers on the field used to arrange their drums in a pile to form an altar. Clergymen would then conduct religious services on this pile of drums to pray for victory in battle. पाइल ऑफ ड्रम समारोह को ड्रम हेड सर्विस के रूप में भी जाना जाता है। पारंपरिक रूप से सैनिक अपनी ढोलकों की टोली को व्यवस्थित ढंग से रखकर एक वेदिका बना लिया करते थे। इस वेदिका के ऊपर पुरोहितवर अपनी धार्मिक रीति से युद्ध में जीत के लिए प्रार्थना एवं धार्मिक सेवाओं का आयोजन करते थे। देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने निशान धारक प्रीतम सिंह, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, तोपची प्रशिक्षक प्रथम श्रेणी निशान लेकर आ रहे हैं और कुछ ही क्षणों में निशान लेफ्टिनेंट कमांडर कर्ण कौशल राष्ट्रपति के निशान का निरावरण करेंगे। Hand spun from the finest Indian silk, the President's colour is carried on a 7 feet long staff made of seasoned ashwood. Adorning the top of the colour is 7-inch gold-plated national emblem of the Republic of India. राष्ट्रपति निशान को श्रेष्ठतम भारतीय रेशम के धागों से बनाया जाता है और इसे पक्की प्रभूर्ज वृक्ष की लकड़ी से बने 7 फीट लंबे मानक पर बांधा जाता है। इस निशान के ऊपरी भाग 4 स्वर्णिम स्वनों से बना है, जिसमें अंकित राष्ट्रीय चिन्ह गणतंत्र भारत का प्रतीक है। देवियों और सज्जनों, अब आपके समक्ष सर्वधर्म समारोह की प्रस्तुति की जाएगी। इसके अंतर्गत 4 मुख्य धर्म सनातन, इस्लाम, सिख एवं ईसाई धर्म के धार्मिक प्रतिनिधि, सूबेदार धर्म शिक्षक H.K. तिवारी, सूबेदार धर्म शिक्षक M.N. खान, सूबेदार धर्म शिक्षक मेजर सिंह एवं सूबेदार धर्म शिक्षक P.G. लाला निशान के लिए प्रार्थना करेंगे। All personnel in uniform are requested to remain seated and remove their headgear on the command parade Topi Utar. हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विधत्सवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिः
अश्विनी मातरः शुभं यावानो विदधे कुजग्मय अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्ये। भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा आज भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य को निशान प्रदान किया जा रहा है। ऐसे सुंदर शुभ अवसर पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य सदैव खुशहाल रहे, उन्नत प्रगति की ओर अग्रसर हो, इनकी मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो, ये और इनका परिवार सुख शांति और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, किसी को किसी प्रकार का कष्ट क्लेश द्वेष न हो, यही परमपिता परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। ओम द्यः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पतयः शांति सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयंकुर शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्य। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवन्तु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह, आज इस मुबारक मौके पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ഐ.എന. द्रोणाचार्य को निशान प्रदान किया जा रहा है। इस मुबारक मौके पर आपसे दुआ करते हैं कि आप अपनी रहमत और अपना करम ഐ.എന. द्रोणाचार्य और ഐ.एन.एस. द्रोणाचार्य के तमाम अफसर साहिबान, तमाम नौसैनिकों के ऊपर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल अता फरमा। ए अल्लाह, इनको जंग के मैदान में, ट्रेनिंग के मैदान में, खेल के मैदान में हर जगह फतह और कामयाबी हासिल अता फरमा। आने वाली तमाम परेशानियों और मुसीबतों से इनकी हिफाजत फरमा। इनके घर वालों के ऊपर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल अता फरमा और साथ ही साथ हमारे मुल्क के ऊपर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल अता फरमा। हमारे मुल्क में अमन और खुशी अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब की दुआओं को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुखदाता पै पंजनो दिस आगे करे अरदास मेहर करे जिस मेहरबान ता कारज आवे रास आपे जाने करे आप आपे आने रास दिस अगे नानका कल गए कीचे अरदास। हे अकाल पुरख वाहिगुरू जीओ, आप जी नूं हाज़र जानदा होया अरदास बेनती है जी, अज भारत के मानयोग राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य नूं आप जी की कृपा नाल निशान प्रदान किए जा रहे हैं। इस शुभ अवसर उत्ते आप दे सेवकां ने आप जी दे चरण कमल परसे हैं। आप दे सेवकां दे समूह कारज रास करने जी, सदा चढ़दियां कलां बख्शिश करनियां, अंग संग होकर सहायता करनी, सरबत नूं चढ़दी कला दे विच रह के राष्ट्र हित विच कारज करने की प्रेरणा बख्शिश करनी जी। दे शिवा बरबोय शुभ कर्मं ते कबू ना टरो ना
का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। The Lord has done great things for us. We are glad. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace, both now and forever. Amen. दर्शकों, अब भारतीय नौसेना पोत द्रोणाचार्य की ओर से निशान अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक जॉर्ज स्करिया माननीय राष्ट्रपति से निशान ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। Ladies and gentlemen, Nishan Adhikari Lieutenant Commander Deepak George Skaria will receive the President's Standard on behalf of INS Dronacharya. Ladies and gentlemen, this is the moment we've all been eagerly waiting for and looking forward to. This prestigious moment will go down in the history of Indian naval ship Dronacharya and the Indian Navy as a red letter day and will remain etched in our memories for a long time to come. देवियों और सज्जनों, अब राष्ट्रपति निशान को राष्ट्रीय सलूट प्रदान किया जाएगा। अतः सभी से निवेदन है कि इसके सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी कार्मिक सलूट करें।
Ladies and gentlemen, you may now resume your seats. Here they come marching in. The personnel in charge of the pile of drums are now marching in to collect their drums. For any unit of the armed forces, color is the symbol of its tradition, pride, valor and bravery. On the 27th of May 1951, Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, conferred the Indian Navy with President's color. You will be glad to know that the Indian Navy was the first to be conferred with the President's color amongst the three armed forces. सशस्त्र सेनाओं की किसी भी इकाई के लिए यह निशान उसकी परंपरा, गौरव, वीरता और शौर्य का प्रतीक होता है। आप सभी को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच राष्ट्रपति के निशान से सम्मानित होने वाली सर्वप्रथम सेना भारतीय नौसेना थी। These associations linking religion with the battle flag are still attached with colors even today. Pile of drum ceremony ending with our drummers marching off to the tune of Sagar Pavan composed by Commander V.C. de Cruz. प्राचीन काल से निशान का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व रहा है। धर्म व युद्ध निशान का यह समागम आज के युग में भी प्रासंगिक है। Ladies and gentlemen, the parade will now march past the dais and salute the Honorable President. During the march past, you are requested to rise as the President's color passes in front of you. All personnel in uniform are requested to salute. देवियों और सज्जनों, परेड अब मंच से गुजरेगी और माननीय राष्ट्रपति जी को सलामी देगी।
आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि मार्च पास्ट के दौरान जैसे ही आपके सामने राष्ट्रपति का निशान गुजरता है, कृपया आप इसके सम्मान में खड़े हो जाएं। वर्दी में उपस्थित सभी कार्मिक सलामी दें। The parade is now marching, keeping in step with the tunes of Sare Jahan Se Acha. देवियों और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं कि परेड कमांडर बिपिन कृष्णा राष्ट्रपति जी को सलामी दे रहे हैं। Ladies and gentlemen, the parade commander Bipin Krishna, marching past the saluting dais. 150 जवानों के शीर्ष पर लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल अहलुवालिया गार्ड 1 के अधिकारी के रूप में राष्ट्रपति को सलामी देते हुए। राष्ट्रपति निशान को गर्व से धारण किए हैं लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक जॉर्ज कारिया। दर्शकों, लेफ्टिनेंट कमांडर सुमित देवराड़ी की अगुवाई में निशान गार्ड 2 सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। Ladies and gentlemen, the first platoon is being led by Lieutenant Commander Aditya Vashisht. कदम से कदम मिलाते हुए प्लाटून नंबर 2 का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर हर्षित पांडे। Proudly leading the 3rd platoon, marching to the tunes of Kadam Kadam Badhaye Ja, Lieutenant Commander Ashish Bharwal. लेफ्टिनेंट कमांडर अनमोल भाटिया के नेतृत्व में 4थी प्लाटून सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। Ladies and gentlemen, leading the 5th platoon, Lieutenant Commander Anirudh Dikshit, and marching past the saluting dais. लेफ्टिनेंट कमांडर अन्वय भगत की अगुवाई में हमारी समुद्री सीमा की रक्षा करने का प्रण लिए प्लाटून नंबर 6। Now approaching the saluting dais, platoon number 7, led by platoon commander Lieutenant Commander Chintan. वीर बहादुर नौसैनिकों की प्लाटून नंबर 8 की कमान संभाली है लेफ्टिनेंट कमांडर यशपाल ने। गर्व से चलते हुए, सफेद रंग में चमकते हुए मार्चिंग दल अपनी बाहों को लहराते हैं, अपनी एड़ियों पर जोर देते हैं और अपना सिर ऊंचा रखते हैं। The Indian Naval Band marching past the saluting dais and playing the anthem of the Indian Navy, Jai Bharati. Marching with pride, shining in white, the marching contingents swing their arms, dig their heels, and hold their heads high with pride.
नौसेना में परेड अनुशासन, गहन समन्वय और गर्व का प्रतीक है। परेड शब्द युद्ध गठन की प्राचीन शैली से उद्धृत है, जिसमें सैनिकों का युद्ध कौशल बढ़ाने हेतु उन्हें संगठित रखा जाता था। यद्यपि आधुनिक युद्ध संगठित संरचनाओं से गतिमान युद्ध समूहों में विकसित हो गया है, आधुनिक सैन्य संगठन अभी भी औपचारिक उद्देश्यों के लिए परेड का उपयोग करते हैं और ड्रिल, अनुशासन और सटीकता का प्रदर्शन करते हैं। Ladies and gentlemen, the Honorable President of India will now address the parade. देवियों और सज्जनों, राष्ट्रपति महोदया अब परेड को संबोधित करेंगी। गवर्नर ऑफ केरल श्री अरीफ मोहम्मद खान साहेब, चीफ मिनिस्टर श्री पिनाराई विजयन जी, चीफ ऑफ naval staff Admiral R. Hari Kumar, officers on parade, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am glad that my first visit to Kerala as President of India has brought me to Kochi to award the President's Color to INS Dronacharya, a premier gunnery training established of the Indian Navy. As the Supreme Commander of Armed Forces, I am happy to present the President's Color to INS Dronacharya in recognition of the expectational service rendered to the nation both in war and peace. I congratulate all personnel for their impressive turnout and well-coordinated drill today. This is a reflection of the high standards of training being imparted to you all. I am delighted to note that this event coincides with the school completing its 80 years of dedicated service to the nation. This institute is a training establishment of international repute and a center for excellence in granary and missile welfare. I am happy to note that personnel from paramilitary and police forces have also been trained as INS Dronacharya. In addition, the institute had fostered India's vision for a secure maritime region by training officers and sailors of our friendly countries as well. I congratulate the alumni and past and present personnel who have served or trained in the institution for their hard work and dedication. I am told that the current Chief of Naval Staff, Admiral Hari Kumar, is also a distinguished alumnus of this school. Ladies and gentlemen, this is my second visit to the Navy establishment as the President of India. I had the honor of attending the Navy Day celebration at Visakhapatnam with our brave Navy personnel. I also witnessed the operational demonstration of the Indian Navy. It demonstrated Navy's preparedness to meet any challenge and also its focus on training and operational excellence. Today, in the Southern Naval Command, I also had a glimpse of the spirit of demand, defend and nation against all threats and protect our maritime interest. Before coming here, I also had an opportunity to visit INS Vikrant and interact with the officers and sailors on board. The indigenously built modern aircraft carrier is a shining example of Atmanirbhar Bharat. Today, India is among select few nations with a capacity of building an aircraft carrier with indigenous technology. I congratulate the entire team of Indian Navy, Cochin Shipyards Limited and everyone associated in the journey of INS Vikrant. I am proud of the brave men and women of the Indian Navy
for serving the nation with distinction and dedication. Ladies and gentlemen, India has a rich maritime history. The maritime strength remains critical to India's strategic, military, economic, and commercial interest. For a nation like India, the fifth largest economy in the world with a long coastline, island territories, and substantial seafaring population, have a strong and modern navy is a very high importance for the last 75 years. A combat-ready, multi-dimensional, and versatile Indian Navy has not only deterred our adversities and safeguarded our maritime interests, but also enabled creation of a peaceful periphery to facilitate socio-economic growth. The nation is proud of the Indian Navy's commitment in protecting our maritime borders, securing our trade routes, and rendering assistance during calamities. Over the years, the Navy has developed significant capabilities to be a mission deployed and response-ready force across the Indian Ocean region and be the fast responder to any contingency in our maritime neighborhood. The country therefore looks up to the Navy to protect our maritime interests, our women and men in whites, and would need to keep themselves updated with the latest technology advancement as well as changing operational dynamics in maritime domain. In the end, I wish the officers and the crew of ഐ.എന. Dronacharya success in future endeavor. My best wishes to all of you and your families. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. I now request Srimati Manju Pillai, Chief Postmaster General of Kerala Circle, to come on to the podium to introduce the special cover. Her Excellency, Honorable President of India, His Excellency, Honorable Governor of Kerala, Honorable Chief Minister of Kerala, respected Chief of Naval Staff, respected Commander-in-Chief, Southern Naval Command, and all the distinguished dignitaries present in this august forum. It is my privilege to present the special cover of the President's Color to ഐ.എന. Dronacharya. Today, 16th of March 2023, is indeed a momentous occasion for ഐ.എന. Dronacharya. The presentation of the President's Color is testimony to the valor and dedication of the Indian Navy. It is a tribute to the nationalistic spirit of sacrifice and security that embodies the core of the Indian Navy. ഐ.എന. Dronacharya, the premier gunnery training institute, has distinguished itself over the decades, earning its distinction with these very traits. It also has an illumined alumni that does the institution proud. The Department of Post, Ministry of Communications, is indeed honored to be part of this momentous occasion and bring out a special cover to be released by Her Excellency, President of India. This is a day which will be etched in the history of ഐ.എന. Dronacharya. The special cover will have great philatelic value and will be treasured by philatelists world over. Thank you. Jai Hind. May I request the Commanding Officer ഐ.എന. Dronacharya, the Flag Officer Commanding-in-Chief Southern Naval Command, the Chief Postmaster General Kerala Circle, the Chief of the Naval Staff, Honorable Chief Minister of Kerala and Honorable Governor of Kerala to kindly proceed to the parade ground for release of the special cover by the Honorable President. May I request the Honorable President Srimati Draupadi Murmu to please come on to the parade ground to release the special cover.
Now, Admiral R. Harikumar, Chief of the Naval Staff, will present mementos to the Honorable President, the Honorable Governor of Kerala, and the Honorable Chief Minister of Kerala. The memento has a statue of Guru Dronacharya, who is in the posture of Lakshya-bhed, representation of ഐ.എന. Dronacharya's singular focus to train officers and sailors to effectively deliver ordnance on target. I request Admiral R. Harikumar to present the memento to the Honorable President Srimati Draupadi Murmu. I request Admiral R. Harikumar to present the memento to the Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Muhammad Khan. And now, may I request the Admiral to present the memento to the Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan. देवियों और सज्जनों, समीक्षा आदेश में बैंड राष्ट्रगान की धुन बजाएगा और राष्ट्रपति जी को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। सभी आगंतुकों से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। Ladies and gentlemen, all personnel are requested to be seated.
In a short while, the Nishan Guard will be marched off. As the Nishan passes in front of you, all are requested to rise and personnel in uniform are requested to salute the Nishan. थोड़ी देर में गार्ड को विदा किया जाएगा। अब आप सबसे अनुरोध है कि निशान के सामने से गुजरते समय अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और सभी वर्दीधारी अधिकारी एवं नौसैनिक निशान को सलामी दें। Ladies and gentlemen, on behalf of Chief of the Naval Staff, my co-commentator, Lieutenant Commander Hardik Singh Jadon, Lieutenant Commander Ambika Sudhakaran, and I, Sub-Lieutenant Kushwant. INS ദ്രോണാചാര്യയ്ക്കിത് അഭിമാന നിമിഷം. നാവികസേനയുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ INS ദ്രോണാചാര്യയ്ക്ക് പ്രസിഡന്റ് കളർ നിഷാൻ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു സമ്മാനിച്ചു. 2004 INS ദ്രോണാചാര്യയെ ഗണ്ണറി ആൻഡ് മിസൈൽ വാർഫെയറിലെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യൻ ആർമി സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ടിലറിയുമായി INS ദ്രോണാചാര്യ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതൃകാപരമായ ധീരത, അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധത, കുറ്റമറ്റ പ്രൊഫഷണലിസം എന്നിവയിലൂടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ യുദ്ധത്തിലും സമാധാനത്തിലും വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നു. മഹാവീർ ചക്ര, കീർത്തി ചക്ര, യുദ്ധസേവാ മെഡൽ, 5 വീർ ചക്ര, 7 ശൌര്യചക്ര അവാർഡ് ജേതാക്കളും INS ദ്രോണാചാര്യയിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഇപ്പോഴിതാ INS ദ്രോണാചാര്യർക്ക് സായുധസേന യൂണിറ്റിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അംഗീകാരമായ പ്രസിഡന്റ്സ് കളർ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.